आज हम वन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमें ज इक्वल्स 3x प्लस वाई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर। पहले हम कॉन्स्ट्रेंट 3x प्लस 5y इक्वल्स 15 की लाइन ड्रॉ करने के लिए इंटरसेप्ट्स फाइंड करते हैं। ये इक्वल्स 0 रखने से x इक्वल्स 5 मिलता है और x इक्वल्स 0 रखने से y इक्वल्स 3 मिलता है। Of Dusri constraint x plus 3y equals 9 key intercepts ni called hein. X-intercept par point, 9, 0, or y-intercept par point, 0, 3, milta high. Abdano lines ko simultaneously solve carte hein. Equation, 2, sex equals 9 minus 3y ni call k equation, I, main substitute caro. Result main y equals 3 or x equals 0 milta high, to intersection point, 0, 3, high. Feasible region 1 triangle Benraha high JISK 3 corner points hein. Point A, 0, 3, Jahandano lines milti hein, point B, 5, 0, Jahan Paley line x-axis ko milti high, or point C, 9, 0, Jahan Dusri line x-axis ko milti high. Har corner point ko dano constraints main check carte hein tak confirm ho ke ye feasible region main hein. Tino points sorry constraints satisfy carte hein. Of objective function z equals 3x plus y ko har corner point par evaluate carte hein. Point A par x equals 0 or y equals 3 Rockney sez equals 3 milta high. Point B par x equals 5 or y equals 0 substitute caro. Z equals 15 milta high. Point C par x equals 9 or y equals 0 Rockney sez equals 27 milta high. Ya sab se bari value high. Obtino values ko table main compare caro. Sab se choti value 3 high point A par, or sab se bari value 27 high point C par. Mubarak ho. Humara final answer ye high, z key minimum value 3 high jo point, 0, 3, par milti high, or z key maximum value 27 high jo point, 9, 0, par milti high.